Hello everyone, my name is Aastha. I welcome you all to our classes for International English Olympiad. Today is our 13th class in this series and today our topic is articles. Articles is easy but tricky, so you have to watch it carefully and understand the basic difference between definite and indefinite so that you know when to use which article and also when not to use any article. That's also important. So these nuances will be cleared once you watch the class. So let's start. So what are articles? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं? Article is a word that combines with a noun to specify the type of reference to the noun. Oh my God, ये क्या मीनिंग दे दिया? बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा. An article is a word that combines with a noun. ये तो समझ आ गया कि जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ यूज होगा. To specify the type of reference to the noun. To specify the type of reference to the noun. मतलब आर्टिकल जो वर्ड है वो नाउन के साथ यूज होगा और स्पेसिफाई क्या करेगा? Type of reference to the noun. ये रेफरेंस होगी दो तरीके की. One could be specific. Okay, and the other could be general. ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं हम समझेंगे कि कैसे कैसे आर्टिकल्स में यूज होती हैं. तो एक चीज हमने समझी कि ये नाउन के साथ यूज होगा एंड दूसरा ये हमें बताएगा रेफरेंस. रेफरेंस मतलब कि या स्पेसिफिक है या जनरल है. ओके, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो पहले हम पढ़ेंगे और उनके हिसाब से एग्जांपल्स लेंगे. A and the. बहुत इजी है, बहुत बेसिक है and only 3 examples we have. A and the. सबसे पहले हम करेंगे indefinite articles. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज indefinite, सेकंड करेंगे हम definite. तो पहले हम करते हैं indefinite articles. All right. A and an. 3 आर्टिकल्स हम पढ़े हैं. A and the. तो इसमें से A, an, A and an. Both of these are indefinite articles. When are they used? They are used when we do not refer to any particular person or thing. मतलब किसी भी particular person या thing में जब refer नहीं कर रहे. Which means generally. जब हम किसी भी general person या thing की बात कर रहे हैं तो हम a या फिर an यूज करेंगे. कैसे वो हम examples में समझेंगे. Alright, so the first type of articles, for the indefinite articles, we are going to study. Now, the words which are singular, which are countable nouns, and they begin with a consonant sound. क्या आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी सारी कंडीशंस याद कर रखनी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है. हम एग्जाम्पल समझेंगे तो यू विल सी हाउ इजी इट रियली इज. Okay, so here you see he is a policeman. Here the article being used is a
Now let's see why is a being used. You see the noun. The noun here is singular. Singular matlab it is only one policeman that we're talking about. We're not talking about multiple policemen, right? Singular ho gaya. Then it is countable because you can count the policeman is only one. And consonant sound because per starts per, that this sound is a consonant sound. So we are using a. Okay. Then she doesn't own a house. What are we using a for? We are using it for house. And house is singular because we're just talking about one singular house, one particular house. And it is countable also. And then it begins with a consonant sound. House begins with the sound her, and her is a consonant sound. So all the three conditions. So now it is we are using a here. Then similarly for the third example, it says I have a pen. Now pen, it is for the noun pen for which a is being used. Pen is singular, only one single pen. It is countable and it begins with a consonant sound. Starts with per. Per is a consonant sound. So we are using a here. समझ गए कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम क्या यूज करेंगे? अ. Now let's see the next conditions. Okay, so here in the next formation we have singular, जब singular word हो, countable noun हो और vowel sound. You see, उसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. सिंगल एंड काउंटेबल नाउन तो सेम है, बस हमें देखना है वॉवल साउंड क्या होती है. फर्स्ट एग्जाम्पल सेज आई एम एन एक्ट्रेस. सो जब देखो, जब सिंगल हो, काउंटेबल नाउन हो और वॉवल साउंड हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन. Okay. I am an actress. Actress. Actress is a singular noun. We were only talking about a single actress. It is a countable noun. And it is beginning with a vowel sound. Start हो रहा है actress. A जो sound है, that is a vowel sound. So vowel sound. So we are using an. Okay. Next, he did not get an invitation. इन्विटेशन को देखना है. इन्विटेशन जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है और वॉवल साउंड है. वॉवल साउंड कैसे है? इन्विटेशन, ए इज अ वॉवल साउंड, सो इट इज स्टार्टिंग विद, सो वी आर यूजिंग द आर्टिकल एन. ओके. नाउ द थर्ड एग्जांपल, शी हैड एन इन्फेक्शन. हम यहाँ पे देखेंगे अपने वर्ड इन्फेक्शन को. इट इज सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन इन्फेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ काउंटेबल नाउन एंड इन्फेक्शन स्टार्ट्स विद ए आई. सो दिस वन again starts with a vowel sound and we will be using the article an. तो हमने देखा कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, वॉवल साउंड हो तो हम यूज करेंगे an. और पिछले में जब सिंगल था, काउंटेबल नाउन था, पर जब कॉन्सोनेंट था तब हमने क्या यूज किया था? देन वी यूज्ड अ. अब वॉवल के लिए वी हैव यूज्ड एन. राइट? आई होप इट इज क्लियर. लेट्स. Okay, so the next category is in agreement with adverb or adjective, if any. Now this one means अगर कोई adverb होगा या कोई adjective होगा तो हम उसके reference में कोई उसके reference के साथ हम कौन सा article use करेंगे.
ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या थे और एडवर्ब्स क्या थे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। एडवर्ब्स क्या थे? एडवर्ब्स were the words which answer the questions like which answer the questions of, there were these 5 questions, if you remember, just write them down. When, where, how often, and to what extent. Okay, these were the questions which were being answered by adverbs. And adjectives. Adjectives were what words? Adjectives were the words which describe something. Okay, so अगर कोई adverb आएगा या adjective आएगा तो हमारे articles कैसे use होंगे? Let's see that now. Just erase this. Okay. So these are the examples. Now, in examples में हम adverb और adjective करने से पहले let's do one thing. These are these two examples. अब इन examples में आप ये दोनों हटा दीजिए और यहाँ पर भी ये हटा दीजिए, ठीक है। और सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा। This was the question which we did in previous slide as well. I am dash actress. Actress जो है, it is a singular, it is a countable noun, but it is beginning with a vowel sound. Vowel sound. Actress, a. That's a vowel sound. So यहाँ पे the article used will be an. Right? Of the next example, he did not contract dash disease. Now here, disease के पास हमें article use करना है. So disease is singular, it is countable, but it is beginning with a consonant sound. And the ones which begin with the consonant sound, we use the article a. Right? But now you have to notice the difference. यहाँ पे हमारे पास a young and an infectious है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से यूज होंगे? यहाँ पे जब हमारे पास ये वर्ड आ जाता है young, young क्या है? एक adjective है. Why is it an adjective? Because you remember we learned that adjectives are the words which describe something. And what is this word young describing? It is describing the actress, actress. So young is an adjective. And now young is beginning with a, it is beginning with a consonant sound. Here. So here we will be using the article a. तो जब हमारे पास adverb या adjective हो तो हम sound जो देखेंगे वो हम देखेंगे उस adverb या adjective की, जो noun है उसकी नहीं, जो adverb या adjective उससे पहले आ रहा है. Alright? Similarly, in the second example, we have an infectious disease. Now here, the adverb is, the adjective is infectious because it is describing what? It is describing the disease. यहाँ पे भी we will be using the article an. Why? Because infectious, it starts with a vowel sound. Infectious. A. Right? So ऐसे ही हमने देखा कि अगर यहाँ पे adverbs और adjectives नहीं होते तो हमारा completely opposite होगा. यहाँ पे हम an use करते और the second one में हम a use करते. But यहाँ पे because adverb या फिर adjective है, so we are using a and an. क्यों? क्योंकि we will be seeing the sound of the adverb or the adjective and not the noun. All right?
I hope you have understood. Now let's move on to the next category. So the next category tells us sound is important, not the letter. Okay. Now, you see, sound is important, not the letter. This one means, हम example से देखते हैं. जैसे you see this. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो और जब वॉवल साउंड हो. जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वी यूज अ, एंड जब वॉवल साउंड है तो वी यूज एन. अब आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर की नहीं. मतलब कोई लेटर ऐसा भी है जो कॉन्सोनेंट होगा पर उसकी साउंड वॉवल की होगी, या फिर कोई वॉवल होगा पर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी. लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहाँ पे आप देखो, she is a European citizen. Now European जो है, it is starting with an E. Now E is a vowel. E vowel है, पर it is a vowel, but इसकी जो sound है, it has a consonant. Has a consonant sound. Vowel होते हुए भी sound consonant की है. European. is a consonant sound. तो हम यहाँ पे a use कर रहे हैं. Okay. Similarly, for he goes to a university. University also. University is beginning with a vowel, but जो sound है university year, that is a consonant sound. So we will be using article a. Then next set of examples. You see, I will reach in an hour. Here, R. R जो है, this is starting with the consonant, but जो sound है, वो vowel की है. And R is starting with the vowel sound, so we will be using the article an. Similarly, she got an F in her exam. An F है तो हमारा consonant, पर sound क्या है? F. A से start हो रहा है, and A is a vowel sound. So we will be using the article an. Alright? I hope you have understood कि हमें sound important है हमारे लिए, and letter नहीं. Letter तो vowel भी हो सकता है, consonant भी हो सकता है, पर उसकी sound उससे opposite भी हो सकती है. तो हमें sound पे ध्यान देना है. Okay? Okay. So हम जब indefinite articles के लिए पढ़ रहे हैं तो ये हमारी last important condition है कि we only use them for singular and not plural. ठीक है? देखो, यहाँ पे एक example लिया है हमने. I saw a bears in Yellowstone National Park. A bears, S, this is plural. So जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो हमारे indefinite articles हैं, we only use them for singular and not for plural. ये plural है तो यहाँ पे नहीं use होगा, यहाँ पे a नहीं use होगा. This is incorrect. But जब है I saw bears in Yellowstone National Park, so bears में there will be no article used. Right? अगर सिर्फ a bear होता, it would have been bear. I saw a bear. तो हम a use करते. Okay?
This is easy. Now let's move on to the next category. Okay, so now we are moving towards the next category of articles. हमने अभी पढ़े थे indefinite articles. Indefinite. Those were the ones which were एक था a and the other one was an. यहाँ पे अब हम करेंगे second category of articles which is definite articles, and the only article we have in this category is the. The कब यूज होता है? When we are referring to any particular person or thing. जब हम specific बात कर रहे हैं, definite चीज की बात कर रहे हैं, specific. हमने देखा था ना indefinite में कि हम किसी general चीज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम एक particular person या thing की बात कर रहे हैं. Alright, let's see the examples. Now you see when it is used, when the is used. First, it is used to talk about people and things we have already mentioned. देखो example. She's got 2 children, a girl and a boy. हमने पहले बताया कि she's got 2 children, a girl and a boy. हमने generally बताया कि एक लड़का है, एक लड़की है. पर हम जब उन्हीं गर्ल एंड बॉय के बारे में दोबारा बता रही हैं, जब वी आर मेंशनिंग देम अगेन, सो व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग द बॉय, मतलब वही पर्टिकुलर बॉय 14 है और वही पर्टिकुलर गर्ल शी इज 8. ओके, सो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल एंड थिंग्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जब हम उन्हीं को रेफर करते हैं दोबारा. सेकेंड कैटेगरी, व्हेन वी आर सेइंग which people or things we mean, जब हम किसी को particularly point out करके बता रही हैं generally. तो जैसे यहाँ पे example है, who's the girl in the car over there with John? हम एक particular लड़की की बात कर रही हैं, एक लड़की है जॉन के साथ कार में, so who is the girl in the car over there with John? Okay, the girl, the car, specifically बात कर रहे हैं, कोई रैंडम बात नहीं हो रही. यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रही हैं, पॉइंट आउट करके. थर्ड, व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन व्हिच पीपल और थिंग्स वी मीन, मतलब जैसे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. अब जो टेबल है, टेबल पे यू नो देयर इज सॉल्ट पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं, could you please pass the salt, तो हम specifically salt की ही बात कर रहे हैं. It is clear कि which salt we're talking about, which thing we're talking about. So the salt. Okay, the is very easy. Now next, okay, now when there are few more categories, कहाँ the use होता है. थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए. जैसे यू सी सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव्स जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में होते हैं थर्ड डिग्री, जब हम बताते हैं कुछ हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल. तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा, मतलब एक ही तो हाईएस्ट माउंटेन होगा, 2 हाईएस्ट माउंटेन तो नहीं हो सकते ना. तो हम एक स्पेसिफिक उसकी चीज की बात कर रहे हैं which is the highest mountain, so we will be using the article the here. Okay, now next, inhabitants of a country. Now here the example, inhabitants होते हैं जो किसी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश, जैसे इंडियन, the Indian people, the Indian live in India. वैसे ही the British, क्योंकि ब्रिटिश तो एक ही कैटेगरी है, हम स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे हैं.
तो इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री के लिए भी हम द यूज करते हैं। होली बुक्स, क्योंकि होली बुक्स जो होती हैं रिलीजन की एक ही होती है, देयर इज ओनली वन बाइबल, राइट? सो वी रेफर टू इट द बाइबल, द भगवद गीता, द कुरान। नेचर के लिए द अर्थ, द सन, द स्काई, द स्टार्स। रिवर्स, रिवर्स भी एक देयर इज ओनली वन गंगा, वन कृष्णा, and the Thames, all these rivers, this is only one river, the Ganges, the Krishna, the Thames, okay? Then seas and ocean, ये भी सिर्फ एक एक चीज ही है ना दुनिया में। So the Arabian Sea, the Pacific Ocean, mountain chains, again Himalayas की एक ही mountain chain है, so the Himalayas, the Andes, the Nilgiris, okay? Monuments, again there is only one Taj Mahal in the world, so उसको हम specifically point out कर रहे हैं, the Taj Mahal. And then the Red Fort, we have the Eiffel Tower, we have the President, the Prime Minister, the अब musical instruments के लिए we will refer to it the violin, the guitar, the flute. For directions as well, हम point out जब करते हैं directions के लिए, then again we use the east, the north, the south, the west. Countries with plural names, the Philippines, the West Indies, जिससे और हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, okay? Then words such as last and next, the last phase, the next candidate, and ordinal numbers के लिए भी the first edition, the second row. देखो फर्स्ट एक ही होगा, लास्ट भी एक ही, सेकंड भी एक ही होगा, इधर लास्ट भी एक ही होगा, नेक्स्ट भी एक ही होगा। तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कि हम जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द वर्ड द, ओके? सो ये थे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द। नाउ लेट्स मूव ऑन। Okay, so now we have the final revision for the article usage flowchart. अगर आप ये आर्टिकल का जो flowchart है ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आर्टिकल लगाना। Let's see. Now, first question you ask yourself is, what kind of noun am I describing? अब ये देखते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक आइटम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके 3 कैटेगरीज हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं कि इफ आई एम डिस्क्राइबिंग वन स्पेसिफिक आइटम, तो अगर तो ये नाउन मास नाउन है या प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? द। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है और सिंगुलर है तब भी हम द यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक आइटम है। स्पेसिफिक आइटम जब सिंगुलर होता है तो वी यूज द, ऑलराइट? पर स्पेसिफिक आइटम अगर प्रॉपर नाउन है तो हम द नहीं यूज करेंगे। जैसे इफ आई रेफर टू माय नेम, आई से गिव दिस पेन टू आस्था। आस्था इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? आस्था स्पेसिफिक भी है, पर यहाँ आस्था प्रॉपर नाउन है तो हम ये नहीं बोलेंगे गिव दिस पेन टू द आस्था, वी विल जस्ट से गिव दिस पेन टू आस्था, ओके? यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सो नन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है वन आउट ऑफ मेनी। जब हम वन आइटम आउट ऑफ मेनी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो या तो प्लूरल है तो कोई भी नहीं यूज होगा, पर अगर वो सिंगुलर है
सिंगुलर है अगर वो, तो अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वी विल बी यूजिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. रिमेंबर कॉन्सोनेंट साउंड. अगर वॉवल साउंड से तो वी विल बी यूजिंग एन. Then third category will be which is one which represents all cases everywhere. Which kind of noun? We are describing the one which represents all cases everywhere. अगर plural है तो कुछ नहीं, और अगर singular है तो we will be using the. Okay? क्योंकि ये जो है this is representing all the cases everywhere. ये एक specific है जिसका कोई alternative नहीं है. It is being representing everywhere the same. So the. This is the article usage chart. Okay, so हम अपने indefinite and definite articles दोनों रिवाइज कर चुके हैं. Indefinite में हमने पढ़ा था a and an. Definite में हमने पढ़ा था एक the. So a कब यूज होता है, an कब यूज होता है, and the कब यूज होता है. हम सबके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं, सबकी यूजेज भी देख चुके हैं, और इनके एक्सेप्शंस भी देख चुके हैं, एंड इनका फ्लो चार्ट भी देख चुके हैं. नाउ इज द टाइम फॉर आवर क्विज. अब जो ये क्विज है, हम क्विज लेंगे, 1 by 1 क्वेश्चंस लेंगे, एंड इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी. These questions are based on the sample questions as per the IEO pattern. Okay. All right. So for the quiz, what we will be doing is, now every question you will be given 1 minute. 1 minute means 60 seconds. Why am I giving you 1 minute? Because you see, your question paper of IEO, it has about 50 questions, and so you can imagine that you get more or less a minute to answer the questions. Now this 1 minute is the maximum that you should be taking for answering the question. Now suppose there could be two, three categories of students. First category is, suppose you answer the question within that 1 minute. So I would request you to fast forward the video and skip right to the answer. You should not be wasting your time. Alright. Now the other students who are not able to answer the question in 1 minute, what you do, you don't skip to the answer. You pause the video and you write down your answer. Alright, it is very important to answer each and every question because there is no negative marking. Here you see, for every incorrect answer, no points, because there is no negative marking in IEO. So it is important that you attempt all the questions. Now for a question of which you are not sure about the answer, now even here and even in the exam, if you are not sure about the answer and you maybe think that B option might be correct or C option might be correct, so you should in that case play your luck and play your mind and make a guess and still give an answer, because it is a win-win situation. Either you will get the marks for that question or you will get a 0, right? But if you don't attempt that question at all, then you are anyway getting a 0 in that, right? So it is good to attempt those questions, and even if you don't know all the answers, try to understand and take a guess. Okay, so this is for every correct answer 10 points. This is just for your own little game where you can try to maintain a notepad. So here you write the name of the chapter and then the question, and then if it is correct you can give yourself 10 points. If it is not correct, you mark it here. So it is important to see these questions, the ones which you mark incorrect. It is important to go back to them later and then see where you did the mistake.
Alright, this is just for your reference. For every correct answer, you can give yourself 10 points. Alright. Alright, so now we move to the first category of questions for articles. This one says, fill in the blanks with the most suitable articles. Let's see. Dash ass is a beast of burden. Now here first we have to see whether we will be filling in a specific article or a general article, which means a definite article or an indefinite article. So here you see we're talking about this as. Now this is an animal. So we are talking about it generally, or we are talking about some specific as. Now here this is a different kind of question, and here we can either talk about it definitely also, and we can talk about it indefinitely also. When we're talking about it indefinitely, so we use article a or an. Now here we see the sound, it starts with a vowel sound, so we can use an, and then for definite we can use the. So the answer is D, both B and C. Alright. Okay, here Dash Suez Canal has reduced the distance between Asia and Europe. So here we're talking about this. We're talking about Suez Canal. So is it specific or is it general? Now this is very much specific. There is only one Suez Canal that we're talking about, and there is only one which has reduced the distance between Asia and Europe. So it is very specific, and the answer is the. And also this is the name of a particular place, a particular canal, a particular thing which is only one. So for that we anyway use definite article the. Alright, here Dash Oliver Twist is a famous novel by Charles Dickens. Alright, so here this Oliver Twist we have. This is in quotation marks. We're talking about this specifically. So here we will not be using any article. No article here. Alright, हम एक title को refer कर रहे हैं. इसके नाम में the नहीं है, so we are not going to use it, and anyway it is in quotation marks. Alright, so no article. Okay, here Ravi goes to dash school regularly. Right, यहाँ पे हम स्कूल को कोई रेफरेंस दे रहे हैं जनरली, कि हम किसी स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर हम कोई स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहे हैं. नो, यहाँ पे देयर इज नो यूजेज, नो नीड फॉर एनी आर्टिकल. ऑलराइट, सो नो आर्टिकल. Okay, here Ravi's father went to dash school to meet the principal. So alright, so now we are talking about Ravi's father went to dash school. Now here this school, हम यहाँ पे कोई स्कूल को स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हैं या जनरल रेफरेंस दे रहे हैं? Specific or general? We are talking about a specific school that he went to, right? A very specific school that he went to meet the principal, particular objective. So here we will be using definite article, which is the. So Ravi's father went to the school to meet the principal. All right. Okay, here Dr. Kalam is dash Newton of India. So here the Newton and Newton. Now here we are again giving a specific reference. So when we are giving a specific reference to a particular title, right? So we can here we will be using the definite article the, and also it is in the middle of the sentence. Dr. Kalam is the Newton of India. There is only one Newton of India. All right, only one title. So the. After the day's labor, Raghu felt sleepy and he went to dash bed. Okay, now here again bed, there's no reference that we are giving. We're just talking about that he went to bed, right? So here again we will not be using any article. All right. Alright,
Right, so here it says dash man you saw here yesterday is dash uncle of mine. So here we have to fill in two blanks, the or the or the and or and. Let's just see first is dash man. Now here are we talking about a specific man or are we talking generally about any man? Here we are talking about a specific man. अभी हमने describe किया है the particular man you saw here yesterday. So we are giving a description. So here we will use the man you saw here yesterday is dash uncle of mine. He is dash uncle of mine. And this is a general reference because a person can have more than one uncle, right? So we will use an indefinite article. Indefinite article as per the sound and. So the correct answer is C. The man you saw here yesterday is an uncle of mine. Okay, next. Dash Tribune is the most popular newspaper in Dash Punjab. So here we are giving the title, of a journal or any newspaper or any magazine. What comes before it? A definite article, which is the. It's a definite article. And then we have here Punjab. For Punjab, any state, any city, कुछ भी location name होता है, तो here we don't use any article. Alright, so the correct answer is yes. The Tribune is the most popular newspaper in Punjab. Okay, here dash ice floats on dash water. Okay, so here ice and water. Here we are talking about these. We're talking about these nouns which are generally plural in nature themselves. Okay, so in front of these we don't really use an article. Like a water या the water भी कहते हैं, a ice. अगर हम सिर्फ एक ice cube की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ice cube. But here कोई reference नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कोई articles use नहीं होते हैं these situations. So the correct answer is D. Ice floats on water. That's it. Alright, here next. So B is dash Lata Mangeshkar of our school. Here again, like we did one for Newton of India. यहाँ पे title है. Title के लिए we can use, especially in the middle of the sentence. So we will use the definite article. So B is the Lata Mangeshkar of our school. Now here, dash Damodar river is known as dash swallow of Bengal. This is pretty easy. यहाँ पे specific river का नाम है and यहाँ पे specific title है. So both of these situations we will be using the definite article. The Damodar river is known as the swallow of Bengal. The correct answer is A. The and the. Okay, here. Dash Shatabdi is dash fastest train of India. This one's also pretty easy. Again, we're talking about the title. यहाँ पे नाम है. So train का नाम है. So we can use the definite article. Then यहाँ पे we are using the superlative adjective. So in front of the superlative adjective, always we use the definite article, which is the. So the Shatabdi is the fastest train of India. The correct answer is. Okay, now next we have I used dash heavy lock as dash hammer. Here, okay, we're just talking in general about both of these, heavy lock and hammer. किसी हम general specific reference नहीं दे रहे हैं. So we will use indefinite articles and indefinite articles. Which one? Consonant sound. So and here hammer again consonant sound. So I used a heavy lock as a hammer. Alright. Okay, here Meera and I went to dash same school. Here we're talking about same school. So यहाँ पे हम specific reference दे रहे हैं या फिर हम general reference दे रहे हैं.
Here we're talking about the specific same school where both of them went to. ठीक है, there is only one school which both of them went to together. So Veera and I went to the same school, which means definite article, and the correct answer is C. Right now here, do you know who invented dash light bulb? Okay, so here for the light bulb, again what are we doing? We are giving a very specific reference. A particular, we are talking only about a particular invention. What is that invention? Light bulb. So what is the correct answer? C. Do you know who invented the light bulb? Alright. Okay, here we have Raman cannot concentrate on dash lecture as he has dash severe backache. Okay, so here first lecture. A lecture, we are talking about a specific lecture. I cannot concentrate on that particular lecture. So definite article the over here. Okay. Then as he has dash severe backache. And for this is uncountable backache. So here we use indefinite article. Talking about generally about a backache, right? So general reference we are giving. So he has we use the article as per the sound. The sound is of a consonant, severe, sir. So we use a. So the correct answer here is A. Raman cannot concentrate on the lecture as he has a severe backache. Alright. So with this, we finish off with our questions on articles. Alright, so that's all for our class on articles. I hope you have understood the basic difference and when to use which article, when not to use an article. So keep revising and keep learning. I will see you the next time. Thank you for watching.